Hello students, welcome back. Today we are going to discuss force on a charged particle moving in uniform magnetic field. First of all, force on charged particle moving in uniform electric field. Let a charged particle Q moving in electric field E vector and E vector along y-axis, charge Q moving with velocity v vector along x-axis, and the electric field E extended in distance x. If a charge Q moving in electric field E with speed v in x direction, then electric force on charge is given by F vector equals to QE vector. And according to second law of motion, F vector equals to ME vector. So ME vector equals to QE vector. And acceleration A vector equals to QE vector divided by M. If a charged particle having charge Q and mass M moving in electric field E, then acceleration is given by A vector equals to QE vector by M. This acceleration acting along E vector, which is in y-axis or y direction. If there is negative charge, in that case the acceleration will be opposite to electric field. From this equation we find that electric field accelerate the charged particles. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, एक्सीलरेट करता है, एंड इट मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज. Let x be length of region of electric field and v be the velocity of particle along x-axis. Then time taken by it to cover this distance, electric field extended in distance x. Then time taken by the charged particle to cover this distance is given by t equals to x by v. ये चार्ज पार्टिकल x डिस्टेंस जो है वो t टाइम में कवर करेगा और t जो है वो किसके इक्वल रहेगा, डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ पार्टिकल v. Along y-axis, the initial velocity of particle is 0. That's why, because it is moving along x-axis. And acceleration along y-axis is given by A vector equals to QE vector by M. So distance y covered in the same time t by the particle is given by y equals to ut plus half at square. यहाँ हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0, सो y इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ QE बाई M into x by v whole square, which is equivalent to y equals to kx square, where k equals to half QE by mv square. This equation is equivalent to equation of parabola y equals to kx square, which shows that the path of charged particle in electric field will be parabolic. चार्ज पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा. नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स
on a charge moving in uniform magnetic field. अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पर ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगा उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव करना है. लेट अ चार्ज q मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड b with speed v at angle theta, then magnetic force on charge depends on, let b vector in horizontal direction from left to right and v vector at angle theta with b vector. Charge q moving with velocity v vector at angle theta with b vector, then force on this charged particle is depends upon number 1 magnitude of charge, force is directly proportional to q, and number 2 depends on magnitude of velocity, the force is also proportional to magnitude of velocity. Number 3 depends on magnitude of magnetic field, force is directly proportional to magnitude of magnetic field, and fourth is sine of angle between magnetic field and velocity. Force is directly proportional to sine theta, where theta angle between v vector and b vector. Combining all equations we get F proportional to qvb sine theta, or F equals to k qvb sine theta, where k is proportionality constant and the value of k in SI system is 1. Then we have F equals to qvb sine theta, or in vector notation F vector equals to q v vector cross b vector. The direction of force we can get using right-handed screw rule और राइट हैंड थंब रूल. यहाँ पे एफ वेक्टर जो है वो वी वेक्टर एंड बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो एफ वेक्टर की डायरेक्शन वही रहेगी जो डायरेक्शन वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की रहेगी. एंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल एफ वेक्टर is perpendicular to the plane containing v vector and b vector. The direction of force given by right handed screw rule or right hand thumb rule. If velocity and magnetic field are perpendicular, then direction of force is given by Fleming's left hand rule. अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उस केस में हम फोर्स की डायरेक्शन को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है उससे भी फाइंड कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी स्ट्रेच forefinger, middle finger and thumb of left hand mutually perpendicular to each other, such that forefinger points the direction of magnetic field B vector, middle finger points the direction of motion of positive charge, that is direction of electric current, then the thumb will represent the direction of magnetic force. अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडल फिंगर पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन जो कि करंट की डायरेक्शन होती है उसको डिनोट करता है, तो थंब जो है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. इफ फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड stretched mutually perpendicular to each other such that the forefinger points the direction of magnetic field B vector, middle finger points the direction of motion of positive charge V vector, then thumb will points the direction of magnetic field F vector. Magnetic field can't be accelerate the charged particles.
means magnetic field can change the direction of velocity, but it can't change the speed of particle. मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करेगा, मीन्स उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा, बट उसकी स्पीड जो है उसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड से चेंज नहीं होता है, मीन्स ये उसको एक्सीलरेट नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई magnetic field applies a force perpendicular to velocity on charged particles. Therefore, the force can't do work on the particle, so the particle can't change its kinetic energy. Force always perpendicular to velocity. Magnetic force velocity के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहता है, so it can't do any work. तो इससे कोई भी वर्क डन नहीं होता. वर्क डन नहीं होता इट मीन्स पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता. काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती इट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड जो है स्पीड का, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स दिस फोर्स कांट एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल्स. स्पेशल केसेस व्हेन थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, it means when the charged particle moving parallel or anti-parallel to magnetic field, then sin theta 0 and force will be 0. When charge moving parallel or anti-parallel to magnetic field, then there will be no magnetic force and charge will move in straight line without acceleration. अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करता और वो सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर सेम स्पीड से मूव करेगा. व्हेन थीटा 90 डिग्री देन साइन 91 एंड द फोर्स becomes F equals QVB. It is maximum magnetic force on that charged particle. ये फोर्स जो है ये क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा. When a charged particle moving perpendicular to magnetic field means theta 90 degree and V vector perpendicular to B vector. V vector perpendicular to B vector in this diagram, the direction of magnetic field perpendicular inward to the plane of paper and the direction of velocity of the particle horizontal direction from left to right. V vector की डायरेक्शन horizontal है left to right and B vector perpendicular inward to the plane of paper. According to Fleming's left hand rule, forefinger points the direction of magnetic field, middle finger points the direction of motion of positive charge, then thumb points the direction of force. Then according to Fleming's left hand rule, the force on this particle in this direction. In the plane of paper, upward direction. Due to this force, the charged particle changes its path, means the path of charged particle curved like this. And the velocity of charged particle at any point is given by tangent at that point. Again, if we find the direction of force using Fleming's left hand rule, then forefinger points the direction of magnetic field, middle finger points the direction of speed or velocity of the charged particle, then thumb points the direction of magnetic force. So force in this case in this direction. Again the charged particle changes its path like this. At this point, direction of motion of positive charge V vector along this, and according to Fleming's left hand rule, force in this direction. Again and again the charged particle changes its path and it acquires a circular path. It means when a charged particle moving perpendicular to a magnetic field, it follows a circular path.
For circular motion, the necessary centripetal force to charged particle is provided by magnetic force. Magnetic force in this case, F vector is equals to Q V vector cross B vector or QVB sin theta. Magnitude of F QVB. This magnetic force QVB provide necessary centripetal force. If the radius of path r, then necessary centripetal force is given by mv square by r. It is equals to magnetic force QVB. When charge moving perpendicular to magnetic field, then there will be a magnetic force QVB directed perpendicular to plane containing v vector and b vector, due to which charge moving on a circular path. यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा QVB मैक्सिमम होगा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v vector and b vector, which change the direction of path of particle. Let we have a magnetic field B vector perpendicular inward to the plane of paper represented by cross. A charged particle, ये रेड कलर में यहाँ चार्ज पार्टिकल शो किया गया है, मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट टू मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ. तो यहाँ पे ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा एंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स QVB. सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उस पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा. ये मैग्नेटिक फोर्स QVB जो है उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. Centripetal force mv square by r equals to QVB. Centripetal force is equals to magnetic force. Then radius of this circular path is given by r equals to mv by QB. Equation number 1. It is very important equation. If a charged particle moving in uniform magnetic field B with constant speed v, then the radius of the path of particle depends on ratio m by q. m by q रेशियो जो है उस पर उस पाथ का रेडियस डिपेंड करेगा. m by q रेशियो जिस पार्टिकल के लिए ज़्यादा रहेगा उस पार्टिकल का रेडियस जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा. उसी मैग्नेटिक फील्ड में सेम स्पीड से अदर पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका m by q रेशियो अगर कम है तो उसके लिए रेडियस जो है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा. टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ, इट इज गिवन बाय t इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ 2 pi r डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड r की वैल्यू इसमें पुट करेंगे देन वी विल गेट t इक्वल्स टू 2 pi m by QB एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज f इक्वल्स टू QB by 2 pi m. From the equation of time period and frequency, we get that frequency and time period of charged particle moving on circular path in uniform magnetic field is independent of speed of the particle and radius of circular path. Note down this point, frequency and time period of charged particle are independent of speed and radius of path. Next is when a charged particle makes angle theta with magnetic field. Let charged particle Q
moving in magnetic field at angle theta, velocity v vector makes angle theta with b vector. If we resolve v vector in its rectangular components, then v1 equals to v cos theta, which is along to b vector, and second component v2 equals to v sin theta, which is perpendicular to magnetic field. There will be two rectangular components, v cos theta along to b vector and v sin theta perpendicular to b vector. If we calculate force due to these two components, due to first component, F1 vector equals to Q V1 vector cross B vector, and V1 vector parallel to B vector, V1 vector parallel to B vector, theta in this case 0 degree, and due to this component F1 equals to Q V1B sin 0, which is equals to 0. Means there is no force on this charged particle due to v cos theta, and the charged particle moving in a straight line with constant velocity v cos theta, constant speed v cos theta जो है उससे क्या करेगा, वो b मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अलोंग मूव करता रहेगा. ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ स्टेट, the charged particle moving along a straight line along magnetic field, तो इस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड कंपोनेंट, फोर्स ड्यू टू सेकेंड कंपोनेंट F2 वेक्टर इक्वल्स टू Q V2 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, एंड V2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर. ये सेकेंड कंपोनेंट जो है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. इन दिस केस थीटा 90 डिग्री, एंड फोर्स F2 इक्वल्स टू Q V2B, and this force will be maximum. If we put the value of V2, then we will get Q VB sin theta. Due to this force QVB sin theta, it is perpendicular to plane containing V sin theta and B. ये जो हमारा पेपर का प्लेन है इसके अंदर एक डायरेक्शन जो है वो किसकी है, V sin थीटा की है ये डायरेक्शन. सेकंड डायरेक्शन जो है B, वो किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की. अब अगर हम बात करें फोर्स की, तो ये फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस फिंगर, forefinger points the direction of magnetic field, middle finger points the direction of V sin theta, then force will be perpendicular upward to the plane of paper, and due to this perpendicular force, यहाँ पे ये कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द चार्ज पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ, एंड F1, due to this component there is no force on charged particle. Due to V cos theta, the charged particle moving along a straight line. Combination of both path, straight line and circular path, combine अगर हम बात करें दोनों पाथ की, then the path of charged particle is combination of circular path and straight path, like this. Means the path of charged particle will be helical. हेलिक्स शेप जो है उसमें क्या होगा, इसका चार्ज पार्टिकल का पाथ रहेगा, एंड दिस डिस्टेंस इज नॉन एज पिच ऑफ हेलिक्स. मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन in one revolution or one time period is known as pitch. Let B vector, it is magnetic field in horizontal direction, and V vector at angle theta with
B vector. Then resolve V vector in its rectangular component. We will get V cos theta component along magnetic field and V sin theta component perpendicular to magnetic. Due to V cos theta, which is parallel to magnetic field, this charged particle tends to move along a straight line in the direction of magnetic field. And second component, V sin theta, perpendicular to magnetic field, due to which this charged particle moving on circular path. And due to combination of straight path and circular path, the resultant path of charged particle will be हेलिकल. हेलिक्स जो है उस शेप में पाथ रहेगा. यहाँ पे ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल जो है इसकी मूवमेंट क्या है, हेलिक्स है, लाइक दिस. जिस टाइप से हमारे पास स्प्रिंग होता है उस टाइप का पाथ होगा, हेलिकल. रिजॉल्विंग वेलोसिटी ड्यू टू v cos थीटा चार्ज पार्टिकल मूविंग along straight line and due to v sin theta moving on circular path. The path will be helical as shown. Time period of charged particle t equals to 2 pi m by qb, which is independent of velocity and radius. It remains same, t equals to 2 pi m by qb. And pitch of helix means the horizontal distance covered by the particle in one revolution or one time period. Then pitch of helix equals to time period into horizontal component of velocity equals to 2 pi m by qb into v cos theta. It will be the pitch of helix. So when a charged particle moving with velocity v at angle theta with magnetic field, then path of the charged particle will be helical. Lorentz force. When a charged particle moving in electric and magnetic field simultaneously, then the resultant force on charged particle is known as Lorentz force. Electric force. When a charged particle moving in electric field, then electric force is given by Fe vector equals to Qe vector. And magnetic force, when charged particle Q moving with velocity v in magnetic field B, then magnetic force is given by Fm vector equals to Q v vector cross B vector. If both fields are act simultaneously on a charged particle, then net force is known as Lorentz force. It is given by F vector equals to Fe vector plus Fm vector, resultant of magnetic and electric force. F vector equals to Fe vector plus Fm vector, resultant of magnetic and electric force, which is equals to F vector equals to Qe vector plus Qv vector cross B vector. It is known as Lorentz force. Thanks. Have a nice day.